Hello everyone. Today's lecture is Induction Type Overcurrent Relay Non-Directional Type. In this lecture, we will cover the constructional details and its operation. And the upcoming next till watch the video till end to know the information about the next video lecture, and also to know the detailed of this lecture. Now start. Induction Type Overcurrent Relay Non-Directional Type. First construction part रे it is having two magnets, the upper magnet and the lower magnet. The upper magnet consisting of two number of two winding. This is primary winding, this is secondary winding. Then lower magnet, it is consisting of only one winding. Then the upper magnet is directly connected to the secondary of a CT or current transformer रो सेकेंडरी रू डायरेक्ट कनेक्ट होइछि हमर प्राइमरी वाइंडिंग. देन प्राइमरी वाइंडिंग सहित किछि टैपिंग्स अछि, करंट सेटिंग अछि. से करंट सेटिंग डायरेक्ट लागिछि प्लग सेटिंग ब्रिज सहित. प्लग सेटिंग ब्रिज रे वी आमे वेरी करि परिबा तार करंट सेटिंग को ए ब्रिज थ्रू रे, प्लग सेटिंग ब्रिज थ्रू रे वी कैन वेरी द करंट सेटिंग according to our requirement. आम रिक्वायरमेंट जेते अछि मनकर 50 एम्पियर करंट आम रिक्वायर अछि. 50 एम्पियर करंट रु एक्सीड हेले मनकर आम डिटरमाइन करंट वैल्यू हैला 50 एम्पियर. देन 50 एम्पियर रु बेसी हेले ही ये ऑपरेट करिवो, रिले ऑपरेट करिवो. तो सेही सेटिंग टा आमे प्लग सेटिंग ब्रिज थ्रू रे कर परिबा. देन आसला देन एठी हमर जो सेकेंडरी वाइंडिंग अछि अपर मैग्नेट रो से कनेक्ट हेछि हमर लोअर मैग्नेट रे सीरीज रे कनेक्शन हेछि. देन सर्किट कंप्लीट हेछि. Then this is the aluminum disc. Aluminum disc is connected to the spindle, and the spindle is connected to the moving contact, which moving contact is normally open in this when relay is not operating. Relay जेतले ऑपरेट करेनी सेते बेले जेतले नॉर्मल करंट फ्लो हुए सर्किट रे सेते बेले ये मूविंग कांटेक्ट ओपन फिक्स्ड कांटेक्ट सहित ओपन थाए. जेतले फॉल्ट हुए सेते ये क्लोज हुए और ये सिग्नल दिए ट्रिप सर्किट क्लोज हुए. देन ये सिग्नल दिए सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करबा लागि. देन एटा किछि टैपिंग्स अछि 1 to 7 नंबर ऑफ टैपिंग्स अछि. एटा टैपिंग्स आसी छै हमर प्राइमरी वाइंडिंग रो करंट सेटिंग हवा पई. करंट सेटिंग हमें देले से अनुसार हमर केते डिटरमाइन वैल्यू रे हमर एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करिवो से एंगल डिटरमाइन करिवो हमर ए जो करंट सेटिंग वैल्यू. Construction part over. Now we will discuss about its operation. Then operation ऊपर में आसीबा. ऑपरेट केमिति करूची एटा केमती करूची जेते बेले ओवर करंट फ्लो होची. ओवर करंट व्हेन द ओवर करंट फ्लो जेते बेले हमर शॉर्ट सर्किट हबो, व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर्स इन दैट मोमेंट द ओवर करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट्स. देन ओवर करंट फ्लो करिवो. जेते बेले ओवर करंट फ्लो करिवो सेते बेले सिटी रो सेकेंडरी रो जेते ओवर करंट फ्लो हबो एठी की प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अपर मैग्नेट, देन इट विल बी मैग्नेटाइज्ड, एंड ड्यू टू current flowing through a coil, then it will develop a flux, and this flux links the secondary winding. Then according to Faraday's law of electromagnetic induction, the secondary winding of the upper magnet will generate an EMF. Then say EMF जो EMF जनरेट करिवो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से EMF रु गोटे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हबो. देन ये जो करंट फ्लो हबो सेकेंडरी हमरो लोअर मैग्नेट रो जो टर्न अछि नंबर ऑफ टर्न्स अछि से कॉइल रे हमरो करंट फ्लो हबो. करंट फ्लो हेले देन द लोअर वाइंडिंग विल बी मैग्नेटाइज्ड. देन दिस लोअर मैग्नेट विल फुल्ली मैग्नेटाइज्ड. देन अपर मैग्नेट विल बी मैग्नेटाइज्ड. एठी अपर मैग्नेट रो जो प्राइमरी करंट फ्लो हबा हेले जो फ्लक्स डेवलप होउची, जो फ्लक्स लिंक करूची एठी से फ्लक्स को हमें वैल्यू देले फ्लक्स phi1. Due to the current flowing through the lower magnet, then it will generate one flux. This is called phi2. ए फ्लक्स phi1 और फ्लक्स phi2 ए दिजन जाकर फेज शिफ्ट जो हबो से फेज शिफ्ट द्वारा तांको भीतर गोटे रिजल्टेंट फ्लक्स बाहरिवो. सेही रिजल्टेंट फ्लक्स को हमें डिफाइन करबा केमती रिजल्टेंट फ्लक्स बाहरुची. देन रिजल्टेंट फ्लक्स कोन करिवो हमर टॉर्क डिफाइन करिवो, टॉर्क डेवलप करिवो. सेही टॉर्क कोन करूची ताको हमें कहूचे ड्राइविंग टॉर्क. जेते बेले ड्राइविंग टॉर्क हबो अधिक हबो हमर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क थारु सेते बेले ही
ए डिस्क रोटेट करिवो गोटे डिटरमाइंड वैल्यू गोटे एंगल ले जो एंगल आम सेट करथिबा हमर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हिसाब रे एटी करंट सेटिंग देकी सेही एंगल ले हमर डिस्क रोटेट करिवो देन डिस्क रोटेट कले जेहेतु डिस्क सहित कनेक्टेड अछि हमर स्पाइरल स्प्रिंग देन स्पाइरल स्प्रिंग सहित स्पिंडल कनेक्टेड अछि देन स्पिंडल सहित मूविंग कांटेक्ट रोटेट करिवो देन मूव कले फिक्स्ड कांटेक्ट सहित ये ब्रिज हबो फिक्स्ड कांटेक्ट सहित ये ब्रिज हबो दैट मीन्स क्लोज हबो जेतेले क्लोज हबो देन ए ट्रिप सर्किट को कंप्लीट करिवो देन ट्रिप सर्किट भी देखेबे केमते ट्रिप सर्किट कंप्लीट होउची एटा से ट्रिप सर्किट जेते बेले हमर मूविंग कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट क्लोज हबो रिले रो सेते बेले ए ब्रिज सर्किट कंप्लीट हबो ये डाउन हबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे मूव हबो जेते बेले ये मूव करिवो देन ए सर्किट जो ट्रिप सर्किट ये कंप्लीट करिवो ड्यू टू दिस इज अ बैटरी सोर्स कनेक्टेड इन द सर्किट देन this is plus this is minus then current flowing through this direction then this coil will be having some magnetic effect and due to this the metal is magnetized this metal will be magnetized and it will pull the moving contact in this way ये कौन करिवो मूविंग कांटेक्ट को पुल करिवो ए वे रे देन कोन हबो सर्किट टा हमर डिस्कनेक्ट हे जिवो द सर्किट ब्रेकर विल बी डिस्कनेक्ट हला परे हमर हेल्दी सेक्शन रु फॉल्टी सेक्शन सेपरेट हबो एटा हला टॉर्क इक्वेशन T directly proportional to phi1 phi2 sin alpha. Phi1 is the flux in the primary winding flux and phi2 is the flux due to the lower magnet. This is the flux due to upper magnet, this is the flux due to lower magnet. And alpha this is the angle between phi1 and phi2. ये phi1 और phi2 भीतर जो resultant angle टा suppose this is phi1 and this is phi2, then यहाँ को भीतर जो resultant angle आसुची से resultant angle को हमें कहूचे alpha. जेते बेले हमारा ओवर करंट फ्लो हबस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट व्हेन ओवर करंट flows through the circuit then the upper magnet will be magnetized and it will generate flux phi1 and the lower magnet will generate flux phi2. तांको दुईटा फ्लक्स बाहरला phi1 and phi2 से दुईटा फ्लक्स भीतर जो फेज शिफ्ट आसीबो सेही फेज शिफ्ट कोन करिवो हमरो टॉर्क डेवलप करिवो जो टॉर्क इक्वेशन मु देखिली एबे टॉर्क इक्वेशन T directly proportional to phi1 phi2 sin alpha. Then this torque is also known as driving torque. This torque is also known as driving torque. In that moment the driving torque is more than the restraining torque. Restraining torque हमें कोडा कहूचे ए जो स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग एटी जो लागिची ए स्पाइरल स्प्रिंग द्वारा जो टॉर्क प्रोवाइड होउची ताको हमें कहूचे restraining torque और स्प्रिंग टॉर्क. से स्प्रिंग टॉर्क कौन करूची जेते इनिशियल टाइम रे अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द रिले इट इज नॉट सफिशिएंट टू डेवलप द ड्राइविंग टॉर्क एटी जनरेट होउनी आउ जोडा कि वेरी स्मॉल इन दैट मोमेंट द ड्राइविंग टॉर्क इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क टू ड्राइविंग टॉर्क बहुत कम जेतेबेले ओवर करंट होउची सेतेबेले यार फ्लक्स रो मैग्नीट्यूड बढ़ी जाउची आउ सी जनरेट करूची जो अल्फा जो करंट हमर फेज शिफ्ट जनरेट करूची से फेज शिफ्ट हमर टॉर्क डिफाइन करूची से टॉर्क T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi1 phi2 sin alpha. Then according to our current setting the disc will rotate in a predetermined angle. Then after the disc will rotate, aluminum disc will rotate, then due to the moving contact is connected to the disc through spindle, then the moving contact will bridge the fixed contact and then the trip circuit will be completed. If the trip circuit will be completed, then current due to this is having some this circuit having say battery source and current will flow through this direction, anti-clockwise direction, then it will this trip circuit will be this coil will be energized and it will pull the moving contact. Then the total circuit will be the faulty sections will be separated or isolated from the healthy section. This is all about the induction type overcurrent relay, non-directional type. The next lecture is induction type power relay. Stay tuned to this channel to watch the upcoming videos. Thank you for watching. If you have any doubts regarding this phenomena, then you can give comments to the comment box. Thank you.